क्योंकि टिंग टोंग होगा तो वी विल रियलाइज ओके। Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start the specialization or generalization concept. In fact, this is also known as enhanced ERD. We call it EERD. So this is known as enhanced ERD. So this is the concept that tells us about the specialization, the supertype and the subtype. आप लोगों में से कुछ ने मुझसे पूछा भी था कि सर इसके अंदर से कोई क्लास निकल सकती है शुरू की क्लासेस में। मैंने कहा था नहीं, अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे। When we will reach to a point where I will be able to show you how there can be a parent class and then the child classes and there can be a concept of inheritance, then I will let you know. So today is the day that we are going to start the specialization and generalization concept. So now check, in fact, what is generalization? It is a process in which, for some specific entity classes that have some common key attributes, we try to find out a general class. इसको उर्दू में समझाता हूँ कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास कुछ खास एंटिटी क्लासेस हों लेकिन उनके कुछ अहम एट्रीब्यूट्स कॉमन हों, तो हम कोशिश करें कि एक उन तमाम की एक जनरल एंटिटी क्लास ढूंढें। सर व्हाट डज दैट मीन? In fact, say we have three entity classes: permanent employee, contractual employee, daily employee. Now, permanent employee has got its own attributes: employee number, employee name, designation, बेसिक पे स्केल एंड मंथली सैलरी। जो एक पक्के मुलाजिम का बीपीएस और मंथली सैलरीज होती है। Then we have contractual employee, another type of entity class. Employee number, employee name, designation, contract date and yearly salary. कि आपको लमसम एक साल में 12 लाख रुपए मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल। And then we have third type, that is daily employee, employee number, employee name, designation, and then the daily employee has the daily wage or the daily rate. आपको 1000 रुपया हर रोज का मिलेगा, 800 रुपया मिलेगा, and we will count at the end of the month that how many days you work. So we will just multiply that number with 1000 rupees, right? So now check, we have three different kind of entity classes with different attributes. Yes or no? And there is one thing common, that all these three, in fact, have some very important, the primary key and free and few attributes common. Amp number, amp name, and designation is common in all these three. So now we will have to think about a general entity class. These are the specific entity classes. One is the permanent, other is the contractual, third one is the daily employee. Now we will have to think about that in fact these three have some very important attributes that are common, right? So now we will think about a general entity class for all of them, and we try to find for these specific entity classes a general class that would be employee. Employee. Are you getting me or not? अब जरा इसको राइट इसको उर्दू में समझ लीजिए। देखिए बेटा, तीन मुख्तलिफ तरह की एंटिटी क्लासेस हमारे सामने आ रही थी जिनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स थे, लेकिन हमने जब गौर किया तो पता चला कि यार ये जो तीन एट्रीब्यूट्स हैं ये बड़े अहम हैं और ये तीनों में कॉमन है। तो हमें एहसास हुआ कि यार ये तीनों एक जनरल क्लास से मिलकर ना निकली है, उसमें से ना आई हो। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं, जनरलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, वी ट्राई टू फाइंड आउट अ जनरल क्लास। तो हम क्या करते हैं, इन सबको सोचते हैं और इन स्पेसिफिक तीनों एंटिटी क्लासेस के लिए एक जनरल एंटिटी क्लास बनाते हैं। पहले आप बताइए, यहां तक आपको बात समझ में आई उर्दू में या नहीं? राइट, राइट। अब जरा मैं इस बच्चे को पहले इन कर लूं, जो भी आया है अभी। अच्छा, ये शायद चला गया दोबारा वापस, ठीक हो गया। अच्छा, and now check what will I do? Remember, here check, मैंने क्या किया, I took a general entity class। आप लोगों को कर्सर नजर आ रहा होता है जब मैं मूव कर रहा होता हूँ तो? येलो कलर का आ रहा है या वैसे आ रहा है, बता दीजिए। राइट, ठीक ठीक हो गया। हाँ, माइक ऑफ करो। राइट, मैं समझ गया। जब ये रिकॉर्डिंग होगी तो दैट दैट वुड बी येलो, राइट? तो इसलिए मैं जान के उसको रिकॉर्डिंग में चेक कर
So now check. Here we had three entity classes: permanent, contractual, and daily. But we went for generalization, so we found out a general entity class. Yes or no? पहले इतना बता दो. So now मैंने कर्सर तो नॉर्मल है, मैं इसको थोड़ा सा वैसे बड़ा कर देता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ तो पूरा नजर आए ना. इनफैक्ट कर्सर की तो अपनी वही है. अरे चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमसे एक बात कर लेता हूँ. चलो अब बताओ, अब नजर आ रहा है? ठीक है, वो जो कर्सर रिकॉर्डिंग में आएगा उसकी फिक्र नहीं करो, वो आ रहा है, वो मुझे पता है कि क्या होगा. अच्छा ओके, चेक. We found out a general entity class. So now how we draw this now in ERD, enhanced ERD. यानी कुछ हमने उसमें enhance करना है. So what we do, if we have an entity class that is a general class, so we make a class employee. Look, this is the general class. It is on the top. And it contains what? It contains the common attribute: emp number, emp name, and designation. Check. Emp number, emp name, and designation. Now we make three more entity classes, but like this: permanent employee, contractual employee, and daily employee. And what they are going to have is an attribute: the employee number, the primary key, and their own. DPS was for the permanent, monthly salary was for the permanent. So, permanent employee entity class will have these two individual attributes. Similarly, contractual employee will have the primary key and contract date and the yearly salary. So, it has its own primary key and its own individual attributes. Similarly, daily employee is going to have the primary key and its own, I'm sorry, this is not the underlined attribute because it is not primary key. So now this is the way we describe or we define the generalization. So general class goes on the top and the individual classes, specific classes come in the bottom, and we relate them not with a diamond, rather with an oval or a circle. And circle should be that much big that we may write down a character, either small d or an O inside this. I will tell you how and when, but how to draw it. So this is the general type, and these are the specific type. सुन रहे हो कि नहीं बच्चे लोग? Right. Now check. Now check. If we have these different specific entity classes, and I want to think about a general entity class. That means I am moving from bottom to top, right? So check this arrow. From the specific to the general, this process is known as generalization. अभी हमने यहाँ पर पढ़ा. We have seen this. Generalization is a process in which for some specific entity classes that have some common key attributes, we try to find out a general class. So check for the specific permanent employee, contractual, and the daily employee. We have gone for the general, that is the employee entity class. पहले बताओ yes or no. Right. अच्छा अब देखो जरा, और इसको फिर से देखते हैं, यहीं से हम आगे ये बच्चा बार बार नॉक कर रहा है, लेकिन जब मैं वहां जाता हूँ तो ये बच्चा वहां नहीं होता. फरहान आ जाओ. चलो. ओके चेक. So now that means now we know about the generalization process. So generalization is what, in fact, when we have some specific entity classes, like there is a user who wants to keep data about the sparrows, pigeons, and the parrots, and I just want to have an idea. Generally, all these three different classes are bird entity class, right? तो general क्या बना? Bird बना. Right. Similarly, if we talk about the university, you people are undergrad students, yani BSK, and we have the grad students, जो कि MS or PhD. So now, when we talk about that, we want to keep data about the undergrad students and the grad students, and they have different attributes. Then we will think about a general entity class known as the student.
So you got the idea of the generalization or not? So now remember, the concept is whenever user tells us about different entity classes, sometime he is telling us like, "Sir, I will keep data about the cars, I will keep data about the jeeps, I will keep data about the four-wheel drives." तो अब कर क्या रहा है? In fact, in his own way, he is trying to tell me specific entity classes. But being a database designer, I am thinking that which entity class is related to the other entity class in such a way that they have common attribute and they can belong to a general entity class. So this is the way user tells us sparrows, pigeons, and parrots, and we database designers think about a general class. They tell us about the, for example, economy class passenger, for example, business class passengers, VIP passengers, and we think about some generalized class. Everybody is a passenger. So passenger will be the general class, and the VIP, economy class, and business class passengers will be the specific entity classes. Are you getting me or not? Right. Now check. There is another concept, specialization. In the case of specialization, user tells us about a general entity class, and we try to ask him, we try to dig out that this entity class can have some specific entity classes. Like say he simply says, "Sir, I want to keep data about the passengers." I said, "Okay, fine." Then I ask him, "Do you think there can be some different types of passengers in your system?" He says, "Yes, I have economy class passenger, business class passenger, some other class passenger." So I am trying for a general class, I am trying to find out the specific entity classes. Now, general से specific जा रहा हूँ. He is telling me general, I am trying to find out the specific. While in this case, he was telling me the specific and I wanted to move towards a general. So now check. Here he is telling me about a general class and I am asking him about the specific. So to read out the definition, it is a process in which for a general entity class, we try to find out specific entity classes that have some individual attributes. अब economy वाले के it has its own attributes, business class has its own attributes. So now if I move back, पहले मैं इस बच्चे को फिर इन कर रहा हूँ शाहिद, अच्छा इसको शाहिद को डांट पड़ेगी शहीद को. अच्छा अब चेक करो जरा. If we move from specific entity classes to a general entity classes class, that process is known as. But if if my user tells me about a general entity class like this, and I move towards and I try to find out specific types with the individual attributes, then this process will be known as. So now check this arrow. This is the same concept. In this concept, in fact, is reverse of each other or opposite of each other. So if I my user is telling me about the specific classes and I'm trying to find out a general class, this is known as generalization. And if he's telling me about a specific some general class, and I am trying to find out the specific classes, special classes, then it is known as specialization. So if I take you back to the presentation, now you will understand it is a process in which for a general entity class we try to find out the specific. अब कुछ समझ में आता है या नहीं? चलो कुछ और हजरात आ गए हैं. अब इंशाल्लाह मुझे लग रहा है 22-23 हो गए, अब नहीं रुकना पड़ेगा. चलो अच्छी बात है, आ जाओ. अच्छा अब देखो. So now we have passenger as an entity class and we are going towards the special entity classes, specific entity classes. So the concept is known as specialization. And when he tells me about the birds, I try to find out the special classes. Students, special classes. So when we look at this diagram, this is opposite concept. The generalization is opposite to the specialization. If we have some special classes, specific classes, and we can make a general class, it is generalization. And when we have a single class and we can find out the simple classes or specific classes, this process is known as specialization.
Are you clear about this or not? Very good. Now check. In fact, this general class is known as super type. Super type. What do we call the general class? And super type always, तो याद रखिएगा बेटा, super type always contains the primary key, there is PK, and there is employee number. And the common attributes, जो कि सब में common है, these are employee name and designation, दो attributes. And these entity classes are known as subtype. General class is super type and specific classes are subtype. And subtype in book, it does not show us this primary key, but I am telling you always keep the primary key in the model. It will be better in the later stage to put it employee number here. So subtype contains the primary key and it also contains the individual attribute. So now check this is the primary key, these two are the individual attributes. This is the primary key, individual attributes. This is the primary key and single individual attribute. पहले बताओ यहां तक समझ में आता है? You got me? बेसिक पे स्केल मैंने आपसे कहा जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, जो सरकारी हमारे यहाँ का जो है खाता, तो हम लोग यहाँ पे बीपीएस हमारा स्केल होता है तनख्वाह का, कि तनख्वाह जो स्केल नंबर 2 वाला है उसकी ये है, या 12 वाले की ये है, 14 वाले की, जिसको आप कहते हैं ना ऑफिसर ग्रेड 17 से शुरू होता है गजेटेड, ये तो पता है ना? तो वो जो ग्रेड है उसको हम बीपीएस कहते हैं अपनी इस जबान में। आप समझ में आती है बात? तो परमानेंट वाले का बीपीएस होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल वाले का नहीं होगा। वेलकम। अब देखो जरा, फिर वापस आ जाओ जरा सारे, अब देखो। So now we have a very clear concept that this general class is the super type with the primary key and common attribute. In these three, two, four, how many are there? I don't know. Here we have only three. So these three would be known as the subtypes, and they will be having the primary key and their own individual attributes. Just forget about this blue symbol, that is employee type. Just look at this diagram without employee type, and if I ask you, give me all the details of employee number 9. I don't have the employee type. Then you will ask me, sir, employee number 9, we will give you the name, we will give you the designation, but sir, please tell us what is the type of the employee and employee number 9. I will say, no, I don't know. So you will ask me, sir, please tell us the employee type so that we may go to that table only. Otherwise, if you will not tell us the type, we will have to look into the permanent employee, then we will have to look into the contractual employee, and then we will have to look into the daily employee, and maybe the employee number 9 is present over here. मैं उर्दू में भी एक दफा इसको समझाता हूँ कि एम्प्लॉय नंबर 9 का डेटा दीजिए और आप मुझे कह रहे हैं सर टाइप बताएं। मैंने कहा टाइप तो नहीं पता। तो आप कह रहे हैं सर अगर टाइप पता नहीं है तो आप मुश्किल पैदा कर रहे हैं, हमें पहले जाके परमानेंट एम्प्लॉय में ढूंढना पड़ेगा, अगर वहां नहीं हुआ तो कॉन्ट्रेक्चुअल में ढूंढना होगा, और उसके बाद शायद हमें डेली में वो मिले। सर आप मुश्किल पैदा करें, पहले बताओ यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट दैट वी हैव अ डिफिकल्टी टू सर्च द डेटा द सैलरी इंफॉर्मेशन ऑफ दिस एम्प्लॉय दैट हैज द नंबर 9 प्राइमरी की 9। कैन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम या नहीं? नाउ चेक। Due to this reason, we always try to place an attribute. I put it blue, I made it blue, so that it must be different from the others. We apply or we attach an attribute to the super type, and we just put the type of this class, employee type in it. And this attribute that we have added is known as subtype discriminator that differentiates between the subtypes. So now it would be like 9 Imran assistant professor, and type में लिखा होगा contract. So if you get the contract in front of 9, in which table you will go to search my data? Very good, sir. Cause here we have got C or contract or contractual. So if you give me 9, I will get your name, I will get your designation, and in order to find the salary detail, I will look into employee type. If it is permanent, I will simply go to the permanent, find the 9, check his BPS, and give you the BPS and salary. But if it is contractual employee,
I will simply go to the CM, I will get his contract date, his yearly salary, and I will provide you. पहले बताओ यहाँ तक कुछ बात समझ में आती है बेटा या नहीं? Now check. Now check. Super type क्या होता है? Super type contains the primary key, common attributes, and subtype discriminator. Check. Primary key, common attributes, and subtype discriminator. Yes or no? And subtype contains the primary key and the individual attribute of that class. Permanent के हैं BPS and monthly salary with the primary key. Contractual के हैं contract date and yearly salary and primary key. और daily के हैं daily rate and primary key. So now check. The subtype contains the primary key and individual attributes. अब बताओ ये आसान हुआ कि नहीं? एंड नाउ चेक, यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन जान के किया था, सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर की डेफिनेशन आनी चाहिए. इट इज एन एट्रीब्यूट दैट वी ऐड, ये हम डालते हैं उसमें, टू सुपर टाइप एंटिटी क्लास में, टू डिफरेंशिएट बिटवीन सब टाइप्स. देयर इज, इट इज परमानेंट एम्प्लॉय और contractual employee or daily employee. So this is subtype discriminator. So this is the explanation of this diagram that I have drawn. Are you clear about this or not? Let me know. Excellent. Very good. Now check. When we have generalization or specialization, we have few rules. That is known as specialization rule. Specialization. So we say that, sorry. These are set of rules that describe whether an instance of a supertype can exist without being member of a subtype or not. Moreover, यानी ये एक नहीं है और भी है. These set of rules describe whether an instance of a supertype can be member of two or more subtypes simultaneously or not. What I did, I have just divided this rule or these rules, ये specialization rules जो है ना, ये अभी एक में describe कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. I have divided into two. These are set of rules to this full stop, and moreover मैंने जान के लिखा ताकि दो अलग हो जाए. Why? Check. Because specialization rule is what in fact set of rules है और एक इनमें से कहलाता, one is known as the completeness constraint and other one is known as disjoint constraint. So that means we do not know so far what are the specialization rules. I will teach you, and then I am telling you the specialization rules are divided into two rules. Number one, completeness, and number two is disjoint. Now we will start with the completeness constant, although I have drawn the diagrams here, but I want to draw it in front of you so that you all must watch and see that how that particular, for example, here, this completeness constant says what, then total specialization inside the completeness is what, and partial inside the completeness is what. So that means we have two sets, completeness constraint and disjoint constraint. Completeness constraint is composed of these two and disjoint is composed of these two. So let me draw it in front of you so that you must know. Okay, right. And let me play a game आसानी के लिए. Control C, file new V, and check. Now give me an answer. If I ask you, I have an employee whose employee number is 9. His name is Imran. His designation is assistant professor, and his type is, for example, contractual, contractual. And now I will ask you how to find this out. Okay. And the second person is 11 dash Abdullah dash lecturer dash and then permanent, PER.
एम परमानेंट, और आगे इसके डेटा में भी आपसे पूछूंगा। और फिर 12, and then here we have Abdur Rahman, assistant professor, and for example permanent, and like this. So can you find one thing that 9 Imran, and let me make that subtype discriminator as well. Let's make it blue and put a line with it. आप लोगों ने सिर्फ अभी समझने में पूरा जोर लगाना है। आई गिव यू टाइम इतना, तो फिर आप बैठ के इसको लिखिएगा। अभी सिर्फ एक रिदम में चलें। और ये देखिए एम टाइप, right? So now check, if I enter the data of an employee, it would be like employee number, check 9, employee name, check Imran, designation, check assistant professor, employee type, contractual. Then again I enter another record, employee number 11, employee name Abdullah, designation lecturer, type permanent. So in this way I can add the data. But I want to ask you something. If I ask my user, will you keep data about any other employee? He says, no, 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 no. I will only keep data about the permanent employees, contractual employees, and the daily employees. So that means any record that is entered over here, its other information will go to either permanent employee if he is permanent, or to the contractual employee if he is contractual, or to the daily employee if he is daily. पहले मुझे बताइए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं उर्दू में एक दफा और दोहरा देता हूँ कि देखिए बेटा, अगर सुपर टाइप में कोई रिकॉर्ड आए, जैसे मैंने भी सिर्फ सुपर टाइप के रिकॉर्ड लिखे हैं, तो अगर मेरा यूजर ये कह दे कि मैं सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय का डेटा रखूंगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का डेटा रखूंगा और डेली एम्प्लॉय का रखूंगा और किसी का नहीं रखूंगा, तो इसका मतलब है जो भी मेरे पास ये आ रहा है, एक रिकॉर्ड आ रहा है, इस रिकॉर्ड का बाकी हिस्सा अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल है तो इधर आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डेट एंड सैलरी। अगर ये परमानेंट है तो इसका यहाँ आ जाएगा, अगर कोई डेली वेजर है नीचे आना पड़ेगा। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आता है? अब बोलो। नाउ नाउ चेक, नाउ चेक। इनफैक्ट द टोटल, एक मिनट इसको एंटर कर लो। अच्छा, अब नाउ चेक। देखो बेटा, when we were studying the rules, the specialization rule, I told you, in fact, these are set of rules that describe whether an instance of a record of a supertype can exist without being member of a subtype or not. So this rule says whether we have to go in the subtype or we can live without going to the subtype. So now check here. In this case, can we live without going to the subtype? My user is saying either he will be the permanent employee or my employee will be the contractual or the daily. So can I stay with this data only? मैं उर्दू में बोलता हूँ कि देखो बेटा, मेरा जो यूजर है वो कह रहा है कि मेरे पास जितने भी एम्प्लॉय आएंगे वो या परमानेंट होंगे या कॉन्ट्रेक्चुअल होंगे या डेली होंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी एम्प्लॉय आ रहा है उसके भी कुछ और डेटा रहता है जो कि नीचे जाना जरूरी है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं इन तीन में ही खेल रहा हूँ। तब आप मुझे बताएं, क्या ये डेटा काफी है? इज इट एनफ और आई हैव टू एंटर डेटा? वी कैन नॉट पुट दिस डेटा विदाउट पुटिंग डेटा इन द सब टाइप। टेल मी। Sir, we will have to, sir, we cannot exist like this because our user has said that I want to keep data about these three kind of employees. So, sir, if this one is anybody, if he is contractual, his data must go in his relevant subtype. So now here, what I'm doing, I will write down contractual, contract date 2/2/2021, इस तारीख को हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डैश डैश डैश, what will be the next value?
ईयरली सैलरी एक साल की, तो हम लिखते हैं जनाब 1200, 1 2 3 1200 हजार रुपए. So now check, in this way this record will be uh, available to us, and our user will be able to get his details, that is name, his designation, his type, and his date of contract and his yearly salary. Check, he can get this now. But we cannot stay like nine Imran, assistant professor, and contractual. No, because user said, I want to keep data about these three type of employees. So I put that. And similarly, I'll have to put this data permanent. For example, grade 18 dash, and for example, 75,000. And then permanent assistant professor, grade 19, and then maybe 1,35,000 rupees. So now check. In fact, in this case, record cannot stay in the super type without going to the subtype. Got me or not? हाँ. उर्दू में सुन उर्दू में सुन लो कि हम सिर्फ सुपर टाइप का डेटा डालकर नहीं छोड़ सकेंगे जब तक हम सब टाइप में डेटा ना रखें. तो लिहाजा दिस इज नोन एज, अब जरा तुम्हें समझ में आना शुरू होगा यहाँ से, और इसको जरा गौर से देखो. दीज आर सेट ऑफ रूल के मैं यहाँ एक एक को अलग अलग यहाँ ये देखो. Completeness constraint क्या है? This is a set of rules that describes whether an instance of a supertype can exist without being member of a subtype or not. ये देखो कितना मजे का है. रह सकता है या नहीं. तो देखो पहला वाला क्या है? This is total specialization rule. And this rule says that, check. This is a rule that describes an instance or record of a supertype cannot exist without being member of a subtype. So that means if we have some record in the supertype, its other information must be in some subtype. उर्दू में सुन लो कि अगर सुपर टाइप में कुछ डेटा आया है तो अगर टोटल स्पेशलाइजेशन का रूल अप्लाई हो रहा है तो आपको सब टाइप का डेटा देना लाजिम होगा. और इसको दिखाते कैसे हैं? देखो, द सुपर टाइप and this circle has double line. This double line gives us emphasis, जोर, अहमियत कि जनाब, if this is like this, then we must put the data in the employee as well as in the subtype. ऐड कर लो, दोबारा पढ़ाऊंगा, रुक जाओ. आगे. अब जरा चेक करो मेरा बेटा इसको एक दफा फिर. मैं यहां से शुरू करता हूं. चेक, दिस वाज total specialization. How total specialization, sir? We have to put the data in the super type as well as in the subtype. So what will we do, sir? We will put double line, double line. This double line tells us we are applying a rule in which we will not leave data only in the super type, but we will also put the data in any of the subtype. अब बताओ ये कौन समझ में आया कि नहीं? एंड दिस फिनोमिना इज नोन, जो मैंने आपसे कहा था ना टोटल्स, तो इसको हम क्या कहते हैं? टोटल स्पेशलाइज स्पेशलाइज क्या कर रहा हूँ यार, रूल. ठीक हो गया, टोटल स्पेशलाइज रूल. सो दिस इज लाइक दिस. पहले बताओ यहां तक कुछ समझ में आया? अब रुक जाओ जरा एक सेकंड. सो आई टेक दिस टू दिस वन, ताकि आपको ना बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि यार डुप्लीकेट स्लाइड, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना चाहता हूँ. मैं सिर्फ इसको मिटा के, सबको मिटा के, और मैं यहाँ पे सिर्फ तस्वीर रखना चाहता हूँ. इसको उठा के ना, ठीक हो गया. और भी ये यहाँ आ जाए, और ताकि जब आप इसको पढ़ें
आपको ये आसानी लगे कि यार ये हमने तस्वीर में देखा था। अच्छा, डायग्राम इसके ऊपर आई हुई है, ठीक हो गया, मैं समझ गया। सो नाउ चेक टोटल स्पेशलाइजेशन रूल। तो ये अब आपके पास, मैं फिलहाल सिर्फ समझ में आ रहा है नहीं, पहले बताओ इस वक्त मैं बहुत टाइम ना जाया करूं। अब समझ में आ गया। सो चेक द कंप्लीटनेस कांस्टेंट से कि can an instance of a supertype exist without being member of a subtype? So we said no, it cannot. In which case? In the case of total specialization. But now I give you another example. Now check if I do another thing. Now I ask my user, will you be keeping data about only these three employees? And no, 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 no. Sometime we hire some internee or intern. You know intern? A person who is getting training during the job, and we say that you are just internee, I will not pay you। जिस पर एक उधर अजान हो रही है बेटा, आपने माइक ऑफ रखना है, ठीक है, ताकि अजान की बेहुरमती भी नहीं हो और हम लोग मतलब बीच में बोल रहे हैं, तो बेशक आप जवाब ना दें, फिलहाल अजान को जवाब दीजिए। So intern, that the person who is working, but sometime internship is paid and most of the time it is unpaid. So that means he is not paying anything, not paying. Got me or not? So you think I must make another entity class internee or intern employee, but without any attribute, should I? बाकी लोगों में से कोई जवाब दे लो, अगर उसकी अजान हो रही है, बेचारा बोले जा रहा है, जवाब दे रहा था वो, कोई और भी जागो। हाँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि it here, if he says I will keep internees or interns and I will not pay them, I'm not paying any penny to them, so should I make another entity class over here, internee, without any attribute? So कोई attribute ही नहीं होगा पैसों का, तनख्वाह का, should I make that? No sir, yes, a table with no data will do what? अब जरा चेक करो, अब जरा चेक करो, अब जरा चेक करो 15 dash, that is the employee number, and now Abdul Basit dash lecturer dash, and check what I'm going to write down. Internee. So now my question is, what else can I put in the subtype? Because it will go where? Where it will go? In the subtype? कहाँ जाएगा? किस टेबल में? इधर अगर मैं एक बना भी लूँ सब टाइप, चलो मैं अभी ये गलत कर रहा हूँ, कोई बनाएगा नहीं, और कोई वैसे भी मैं आज मैं बनाने नहीं दे रहा हूँ, ताकि मुझे कुछ गलत फहमी हुई है कि पढ़ा कोई नहीं जा रहा किसी से, तो मैं आपको टाइम दूंगा। मैंने यहाँ पे, चले आपके कहने पे मैंने इंटरनी बना लिया, इसका एट्रीब्यूट क्या रखूं बेटा यहाँ पे? हाँ जी। मैंने आपसे कहा कि इसका हमने कुछ करना ही नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया, ना पैसे दे रहे ना कुछ और, बस इसका हमें ये डेटा चाहिए कि इसका ओहदा क्या है, वो लेक्चरर है, इसका नाम क्या है और इसका टाइप क्या है, तीन चीजें चाहिए। अब बताओ क्या करें? इसका मतलब है तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे टाल रहे हो।
कहाँ डालें एट्रीब्यूट? तुम मेरा मतलब नहीं समझ रहे सारे बच्चे, गौर करो। मैं कह रहा हूं ना इसकी सैलरी रख, देखो ये नीचे क्या रखना था असल में, तुम नोट करो, सैलरीज रखना है, हाँ या नहीं? तो अगर मैंने उसकी सैलरी रखनी ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे कोई क्लास बनानी चाहिए? पहले जरा ये सोचो। ना, नाउ चेक। अब जरा देखना शुरू करो सारे, गौर से, अब पिटाई होगी ऑनलाइन ही। ये देखो, एम्प्लॉय नंबर मौजूद है सुपर टाइप में या नहीं? ये देखो, नेम मौजूद है या नहीं? डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय टाइप, एम्प्लॉय। So now that means we do not need any extra entity class. His data will reside only in the super type, and there is no need to keep his data in the subtype. अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं? मैं उर्दू में एक दफा, उर्दू अच्छा अब आ गई है, चलो उर्दू में फिर एक दफा सुन लो। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि इस सूरत में हमें, अब जब यूजर ने कह दिया कि मैं ऐसा एक बंदा रखूंगा जिसको मैंने कोई पैसे नहीं देने, कोई तारीख शारीख नहीं लिखी, बस जी काम सिखाऊंगा, तो हमें उसका कोई यहाँ पे टेबल नहीं बनाना, कोई एंटिटी क्लास नहीं बनाना। हमने सिर्फ उसका डेटा सुपर टाइप में रखेंगे और वो सब में नहीं जाएगा। तो दो केसेस बने। एक केस तो हमारे पास अभी बना था, जरा ये देखना। मैं इसको भी सेव कर लूं, सेव एज, बल्कि एक सेकंड रुक जाओ, इसको देखो, जिसमें सिर्फ द केस इन विच द डेटा कैन रिजाइड इन द सुपर टाइप विदाउट गोइंग टू एनी सब टाइप इज नोन एज। मैं इसको पहले रेड कर दूं ताकि तुम्हें ये भी नजर आए कि अच्छा यार इसके लिए क्या सिंबल है। दिस सिंगल लाइन इज द सिंबल, ये खुद सिंबल है। एंड हियर आई राइट डाउन, वो था टोटल स्पेशलाइजेशन, दिस इज नोन एज पार्शियल स्पेशलाइजेशन, सॉरी, स्पेशलाइजेशन रूल। गॉट मी और नॉट? तो ये देखो, अगर डबल लाइन है तो फिर ये नहीं जिंदा रहेगा, फिर इसको नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंगल लाइन है तो फिर ये पार्शियल है, आधा रिकॉर्ड रुकेगा। तो मैं इसको भी जरा सेव कर लूं एक लम्हे के लिए, जहां पे मैंने टोटल लिखा था वहां मैं इसको अब पार्शियल कर दूं। तो ये देखो, अब तुम्हें समझ में आया कि अच्छा ये है द कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट। अब जरा इसको यहाँ से पढ़ो, तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट क्या कहता था, जरा पढ़, सॉरी, पढ़ कर देखो। So now it says this is a set of rules that describe whether an instance of a supertype can exist without being member of a subtype or not. तो देखो, अगर मेंबर नहीं बनेगा तो कौन सा बन जाएगा रूल? अगर जरूरी ना हो सब टाइप में जाना, टोटल बनेगा, पार्शल, पार्शल। और अगर सुपर में रहे और वो ना रह सके सुपर में बिना सब टाइप्स में डेटा दिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? टोटल स्पेशलाइजेशन। टोटल, तो टोटल मीन मुकम्मल, पार्शियल मीन आधा, यानी वो आधे। अब इसको रट्टा लगाने के लिए सोचो कि वो आधा यानी सुपर टाइप में हो और सब में ना हो। पहले बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट अब कंप्लीट समझ में आता है? तो डबल डबल, right, double line will show the total specialization and single line will show you the partial specialization। पहले बताओ ये कुछ क्लियर हो गया? एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, अब मैं इसको फिर तुम्हारे लिए वही वाला जो मैंने अभी एक हरकत की थी फिर दोबारा करते हैं, ताकि ना हमें ज़्यादा बेहतर चीज़ें ज़्यादा अच्छे अंदाज से हमारे हाथ में आ जाए सब। सॉरी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, राइट। और अब क्या कीजिए, यहाँ से सिर्फ इसको ले आइए, इस वाले को, ताकि आपके नोट जब आप देखें तो आपको पता हो कि यार हर चीज़ हमें मिलती जा रही है और बिल्कुल मुकम्मल मिल रही है, राइट। फिर वही मसला बन रहा है, इसको चेक कर लेना यार। ये
So now this is partial specialization. So यहाँ तक कुछ क्लियर हो चुका है हमें, ऐसे ही है. So now check. We have studied completeness constraint, in which we have studied total specialization and the partial specialization. Now we will study the disjoint constraint and the disjoint rule and the overlap rule, right? So now I will teach you this part. These set of rules describe whether an instance of a supertype can be member of two or more subtypes simultaneously or not. Look, so far we have seen one record of the supertype goes only into the one subtype. Yes or no? But now he's saying there is a possibility that one supertype record can go to two or more subtypes. Sometime it is possible, sometime it is not possible. So now check total. And now here disjoint constraint. So again I repeat, these are set of rules that describe whether an instance of a supertype can be member of two or more subtypes or not. And now check. One is known as disjoint rule. This rule describes that an instance of a supertype cannot be member of two or more subtypes simultaneously. It rejected. It says if a supertype record goes to a subtype, it will only go to one subtype, not more than one. Now check, how is it possible? Look, employee can be either only permanent employee or contractual employee or daily employee. That means a permanent employee cannot also be a contractual employee. यानी अब उर्दू में सुन लो कि जो एक परमानेंट एम्प्लॉय है वो कॉन्ट्रेक्चुअल भी साथ ही नहीं होगा, या वो कॉन्ट्रेक्चुअल होगा या परमानेंट होगा या डेली होगा. अगर एक डेली वेजर है तो वो डेली वेजर ही होगा, वो कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट में से कोई नहीं होगा. तो किसी एक में जाना है. पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है या नहीं, पहले ये बता दो. तो ये सबसे सिंपल है. तो इसको हम देखो क्या कहेंगे, जरा देख लो इसको. This rule describes that an instance of a supertype cannot be member of two or more subtypes simultaneously. तो देखो हम क्या करते हैं, हम इस दायरे के अंदर, as I told you, we write down D or O. So I wrote down, or I typed down D. That means disjoint. An employee can go either to this one or to this one or to this one. That means an employee can be permanent employee, can be contractual employee, can be daily wage. So there, here we have this D, and D describes the disjoint rule. Got me or not? Now check. Now check. The मैं दोबारा बता रहा हूँ. देखो बेटा, इसमें ये हो रहा है कि वो कहता है टर्न ऑफ योर माइक्स गाइस, टर्न ऑफ योर माइक्स. देखो वो ये कह रहा है कि अगर सुपर टाइप हो और सुपर टाइप के साथ ये लाजिम हो कि वो दो में ना जा सके, यानी वो परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, या वो कॉन्ट्रेक्चुअल और डेली एम्प्लॉय नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर डी लिख देते हैं. जो हमारे डेटाबेस इंप्लीमेंट करने वालों को पता दे देता है, बता देता है कि यार दो में मत जाने देना, दो में डेटा ना जाए. तो लिहाजा अब क्या होगा, ये डी जो है डिसजॉइंट है. दैट टेल्स and the data of an employee in super type will go in only one subtype. It cannot be in two or more subtypes. तो ये इसका कॉन्सेप्ट है डिसजॉइंट रूल का. अब ये समझ में आता है. अब देखो एक डिफरेंट चीज है जो अभी हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन बनाऊंगा तो फौरन आ जाएगी. एंड दैट इज ओवरलैप रूल. Sometimes it happens that an instance of a supertype can be underline किया है, member of two or more subtypes simultaneously. एक ही वक्त में वो दो के साथ जुड़ा हुआ होता है. तो मैं इसको एक सेकंड में आपको बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में पूरा आ जाए. जरा एक लम्हे को इसको हम बंद करते हैं और हम इसको म्यूट करेंगे. चलो अब देखना जरा. Say we have an entity class known as vehicle, and my user tells me he wants to keep data about the cars or the jeeps or those vehicles that have the four-wheel option. Anybody can tell me what is the four-wheel drive option? We normally use the vehicles
having the four wheel on some hilly area, some mountains, some desert, some uh, muddy area. So what is that four wheel drive option? Anybody? 4x4 क्या है? बहुत, मैं तुम्हें सच बताऊं, चलो अभी एक रुक जाओ, कोई बच्चा ईमानदारी से बता दे कि सर मुझे नहीं पता, और मैं फिर बताऊंगा कि ऐसा होता है, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, हमें भी बहुत अरसे तक नहीं पता था। कोई एक बच्चा सिर्फ बोल दे जिसको वाकई नहीं पता कि सर, नहीं कि फोर व्हील नाम नहीं बताओ अपना, सिर्फ कहो हाँ नहीं पता, राइट? सो नाउ गाइस, वन थिंग इज important. Our normal cars are work in a way that either their rear wheels पीछे वाले पहिए और their front wheels आगे वाले दोनों पहिए चलते हैं, दो पहिए एक वक्त में चलते हैं इंजन के साथ, चारों पहियों का जोर इंजन नहीं देता, दो पहिए फ्री होते हैं, तो हम कहते हैं ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये रियर व्हील ड्राइव है। तो हमारी कारें जो हैं, नॉर्मल कार्स जो हैं, आम कारें, ये नॉर्मली 4x4 नहीं होती। इसके बरक्स देर आर कार्स जिनके अंदर ऑप्शन होता है, उस पर लिखा होता है 4x4 यानी 4x4। उसका मतलब ये होता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है, एक लिवर है जिसको जब हम खींचते हैं गियर को, तो क्या होता है, हमारे चारों पहिए इंटैक्ट हो जाते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं सैर करने और कहीं पे पहाड़ी एरिया है और पत्थर हैं और हमारे एक टायर हवा में है और तीन जमीन पे हैं, या एक टायर कीचड़ में, दो फंसे हुए हैं और हम गाड़ी फंस चुकी है, तो हम दूसरे दो टायर्स को भी इंटैक्ट करना चाहते हैं, तो हम वो लिवर ऑन करते हैं तो चारों पहिए चलने शुरू हो जाते हैं। जिसका फायदा ये होता है कि गाड़ी पहाड़ों पर, सहरा में, किसी कीचड़ की जगह में वो आसानी से चली जाती है। तो पहाड़ों पर अमूमन वही गाड़ियां यूज होती हैं। तो लिहाजा अब मुझे बताओ, फोर व्हील का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? Now check. If my user says he wants to keep data about the vehicle, and then I ask, यार specialization करता हूँ जरा, I asked him what kind of vehicles. He said about all the cars. I said fine. Then he said about all the jeeps. मैंने कहा very good. And then he said about every car that has 4x4, 4x4 feature. So now I want to ask you something. Say I have a car and car's attribute is A, B, C, D. For example, this is a car, okay? A, B, C, D is a car. Now let me know one thing. This is a car that has no 4x4 options. So its data will be here in the vehicle, all the attributes, its registration number, its engine number, its chassis number, its make, its model. And if it is a car only, it is not 4x4, then its data will go where? In car, very simple, over here. Say, मैं फिर उर्दू में बोलता हूँ, अगर एक गाड़ी है तो उसका टोयोटा है, उसका मॉडल 2015 है, उसका जो भी मालूमात है, एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पर आते हैं। और जो उसके कार के कोई एट्रीब्यूट्स वो रखना चाह रहे हैं, वो कार वाले में चले गए। लेकिन अब वो जीप या फोर व्हील में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमने नहीं कहा, वो उसमें है नहीं। बट इफ आई से दैट आई हैव अ जीप, चेक, तो जीप का डेटा तो यहाँ आ रहा है, हाँ या नहीं? व्हीकल है जीप या नहीं है? पहले बताओ, व्हीकल जीप है भी या नहीं है? है, राइट? तो उसका डेटा यहाँ पर आ गया। और फिर सब टाइप में किस में जाएगा, कार में या जीप में? जीप में। So its data will be here. But now check my question now. If I ask you, there is a car which is 4x4 also, आपकी एसयूवीज जो होती है ना, लैंड क्रूजर और फलाने शलाने सारे, ये सब क्या होते हैं? ये 4x4 होते हैं अमूमन, वीगो वगैरह। अब बताओ, इट इज अ कार एज वेल एज अ 4x4, so where its data will go? Sir, it will go to the car, में भी। इस बच्चे ने सही जवाब दिया है, इसने सही जवाब दिया, भी मीन नाउ इट विल बी ओवरलैपिंग। उसने कहा है कैन एग्जिस्ट, दो में रह सकता है, ओवरलैप है। तो आई विल पुट एन ओ इनसाइड दिस, दैट इज इट इज पॉसिबल दैट डेटा may go into
car and 4x4. And I may give you another example. For example, this color. Say I have a vehicle. There is a jeep, and normally, most of and all of the jeeps are also 4x4। पहाड़ों पे जीपें चलती हैं, आपने सुना था। ये तो अब लग्जरी जिस तरह की आ रही है ना गाड़ियां, एसयूवीज, पहले तो यही था, जीपें होती थी और यही जाती थी, हाँ या नहीं? So now we are very much clear. In some cases, in the case of employee, we were not able to put data into kind of employees. But in this case, we are able to put data। ब्लू देखो अभी आप, कार भी है, 4x4 भी है, जीप भी है, 4x4 भी है। तो अब समझ में आएगा, जरा वापस आइए यहाँ पे, इसको जरा चेक कीजिए, इस डेफिनेशन को भी बच्चा पढ़े मेरे लिए। साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में। तो अब जरा मुझे बताओ, बात समझ में आती है या नहीं? कि आपका सुपर टाइप जो भी है वो एक ही वक्त, देखो ब्लू को चेक करो, कोई गाड़ी थी, हमने कहा क्या है ये, आपने कहा सर दिस इज अ कार, वीगो है, और सर ये 4x4 भी, देखो दो में चला गया। मैंने कहा ये क्या चीज है, आपने कहा सर एक जीप है और इस जीप के अंदर 4x4। मैंने कहा एक्सीलेंट। तो नोट करो, ये तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट था जो थोड़ा सा तुम लोगों को लगता है, लेकिन अब मेरे ख्याल में, मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? So now check, this was the specialization rule। तो ये अब आपने पढ़ना है और आपने इसके नोट्स वहां से लेने हैं। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, जो लेट आ रहा है, 1.5 घंटे बाद आ रहा है वो भी, और जो वक्त पर आया था वो भी। अपना वो ऑन कीजिए, उधर से बैठ के देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बैठ के इसको मुकम्मल करें। आपका टाइम ज्यादा होगा, उन बच्चों का 6 बजे तक है, आपका 8 बजे तक रात को होगा। आज मैं ये कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जो आपका ये 1.5 घंटा है ना, अव्वल तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो बच्चे थोड़े से बेहतर हैं वो इसको इसी 1 घंटे में, 1.5 घंटे में नमाज पढ़ें, बस अभी जोहर की, और खाना खाएं, और अभी इसको करें। जहनों पे बोझ मत डाला करें कि यार रात को कर लूंगा। 8 बजे का मतलब 8 बजे नहीं होता, 6 बजे होता है। ठीक है, तो अभी इसको कीजिए और एक काम करें, जिन लड़कों ने अटेंडेंस नहीं लगाई थी वो अब अटेंडेंस लगाएं, ताकि उनकी अटेंडेंस का टाइम लेट नजर आना शुरू हो जाए। जैसे 12:43 नजर आ रहा है सी आर साहब का। अहमद, क्या वजह थी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हसनात दूसरी क्लास का है, ठीक है। अहमद कहाँ है फिर हमारा? मोहम्मद अहमद, तुम पहले से आए हुए हो? चलो शाबाश शाबाश शाबाश। बस जिसने नहीं लगाया सिर्फ वो लगाए, बाकी लोग ना लगाएं, क्योंकि मैं अब ये रिकॉर्ड रखना चाह रहा हूँ कौन सा बंदा आदि मुजरिम है और कौन सा बंदा जो है ना वो मजबूरी में कभी कभी लेट हो रहा है। तो अब इसका ख्याल रखना है, इसको पढ़। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो अल्लाह ताला मगफिरत करे। उसे कहना ठीक है, और सीआर को बता देना कि ये अपने पास मेंशन कर ले कि यार मैंने इस